So, hello everyone. Welcome to the We Will Listen podcast. Today, I, Karan Jain, will be your host, and we have a very special guest here today, Mr. Hriday Singh Sahi. He is a very active. He's a very active activist related and does a lot of social work. He is one of my mentors, and I really look up to him. And he also handles his own mental health page, which was the Social Family. So, Hriday, hi. Hi, Karan, and thank you so much for that beautiful introduction. Thank you, sir. The pleasure is all mine. So I think so. We should get started. First up, Let's go. let's talk about mental health awareness. What do you think that around you find mental health की awareness क्या है, कितनी होनी चाहिए, standards पे है कि नहीं? Uh, they, to be very honest and very frank, बहुत ज्यादा बुरी हालत है इस टाइम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की अगर बात करूं। जो अभी हमारी प्रेजेंट जनरेशन है वो किसी हद तक इस चीज को समझ रही है। दे आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। बट अगर तुम हमारी पिछली जनरेशन की बात करो, अपने पेरेंट्स की बात करो, ग्रैंड पेरेंट्स की बात करो, तो द सिचुएशन इज पिटिएबल। उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा इस चीज से, एंड वो इस चीज को उतना सीरियसली लेते भी नहीं है। बेसिकली बिकॉज जो कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ है, जो एक अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, वो अभी पिछले कुछ सालों में ही हुई है। वी कैन नॉट ब्लेम देम, बट द थिंग इज, यू नो, लर्निंग की कोई एज नहीं होती है। इफ वी स्टार्ट नाउ, if this generation takes up the initiative, if this generation takes it on their shoulder कि हमें ये चीज आगे फैलानी है, हमें अपनी पिछली जनरेशन को इस चीज के बारे में कन्विंस करना है, उनको समझाना है, तो a big difference can be created very easily in a very short amount of time. तो बेसिकली एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी देयर. एक सबको Exactly. अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है. यू फील देयर इज अ बिग गैप, so we have to cover it. Great. Okay, so one of the main topics I wanted to talk to you about was you and I both actually, but you more than me, have been in very close proximity to a lot of political and heated debates about politics. So I believe, personally, I try to stay away from them as much as possible because I believe they affect my mental health a lot. But I would like to ask your views on how do you think that political debates and political, discussions affect mental health, your relationships, and your environment? See, to be honest, I always tell my juniors and even my younger brothers and sisters कि भाई इन पॉलिटिकल डिबेट्स में मत पड़ो, बिकॉज जिस तरीके से ये चीजें तुम्हारी मेंटल हेल्थ को खराब करती हैं, जिस तरीके से ये तुम्हारे रिलेशनशिप्स को खराब करती हैं, तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट को खराब करती हैं, आई हैव गॉन थ्रू दैट एंड आई पर्सनली डू नॉट विश कि कोई और इन चीजों से जाए। आई हैव लॉस्ट फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ दैट. I have family members who are not willing to talk to me because of my political opinions. And mental health जो खराब होती है, जो तुमको हेट्रेड मिलेगा, एंड अब ऑब्वियसली बात है, अगर तुम दो लोगों के साथ तुम्हारी हीटेड डिस्कशन हो रहा है, तो समवेयर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा भी पारा चढ़ेगा, एंड नो वे दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. तो इस टाइम जो आजकल अगर तुम देखो कि पॉलिटिक्स को लोग बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, जबकि पर्सनली आई बिलीव पॉलिटिक्स इज नॉट समथिंग विच शुड बी टेकन सीरियसली. बट जिस तरीके से आजकल हर बच्चा पॉलिटिक्स को इतना सीरियसली ले रहा है, तो आई फील के एक कहीं ना कहीं पीपल शुड ड्रॉ अ लाइन बिटवीन देयर पर्सनल लाइफ्स एंड देयर पॉलिटिकल ओपिनियंस, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट करती है तुम्हारी मेंटल हेल्थ को. रिलेशंस को तो करेगी करेगी, बिकॉज ईगो पे अगर बात आ जाए तो पीपल टेक इट पर्सनली. ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो पीपल ऑफेंड बड़ी जल्दी हो जाते हैं आजकल. तो आई यूजुअली टेल पीपल कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो, बिकॉज यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट, बट यू विल डेफिनेटली लूज अ लॉट. Very valid point. And politics say, you come to a very recent culture जो बन गया है, that is cancel culture and calling people out. आई बिलीव उससे जो टारगेटेड बंदा होता है उससे उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. आई बिलीव द पर्सन हु इज टारगेटेड, हु इज बीइंग कॉल्ड आउट पब्लिकली, जिसको पब्लिकली कॉल आउट, सो कॉल्ड कॉल आउट करते हैं, एंड जिसको कैंसिल कल्चर की, इसको कैंसिल कर दो, ही इज मासली रिपोर्टेड ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर, तो उस बंदे की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है. आई बिलीव दैट.
So what do you think? Is this, calling out and cancellation culture, is this somewhat leading towards bullying? Basically, it is bullying. What is bullying? If you just go on and define bullying, that it is basically a couple of people picking up on someone. That is bullying. तो अगर फॉर एग्जांपल लगा लो कि किसी बंदे का पॉलिटिकल ओपिनियन तुमसे अलग है और यू फील थ्रेटन्ड बाय हिज ओपिनियंस, तो पहली चीज तो यू आर अ स्नोफ्लेक कि तुम्हें किसी बंदे का ओपिनियन इतना ज्यादा ट्रिगर कर रहा है कि तुम इतनी गंदी और घिनौनी चीजों पे उतर रहे हो. एंड सेकेंडली, यू आर जस्टिफाइंग योर मोरल. यू आर नॉट जस्ट जस्टिफाइंग योर सेल्फ, यू आर जस्टिफाइंग द पॉलिटिकल अफिनिटी यू आर कनेक्टेड टू. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ राइटिस्ट और अ लेफ्टिस्ट, तो क्या तुम्हारे ओपिनियंस इतने वीक हैं कि किसी एक बंदे को गिराने के लिए तुम पूरी कम्युनिटी उसके पीछे लगा रहे हो? दैट्स जस्ट बुलशिट एंड दैट इज स्टूपिड. एंड जिस तरीके से किसी बंदे को अगर तुम टारगेट कर रहे हो, ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट हिम. आई हैव गॉन थ्रू दैट. आई हैव हैड स्टोरीज ऑन माय नेम. आई हैव seen people boycotting me, bullying me, sending me anonymous messages. I've gone through that. I've had a very close encounter with all that stuff. So, this is just pointless because I've gone through those nights where, I used to feel bad for myself. I used to feel like that I should just leave Instagram. I should quit Instagram. I should stop talking to these people, stop talking about politics and stop doing all that. But, अब हम ढीठ हो गए ना, अब हमें इतनी आदत पड़ गई है इन चीजों की कि अब फर्क पड़ना बंद हो चुका है. बट टू एनीवन एल्स आई विल जस्ट से कि भाई, या तो पॉलिटिकल डिबेट्स वगैरह से दूर रहो. एंड अगर तुम लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो जो एक लाइन है, एक गैप होता है, उस चीज को समझो. पॉलिटिक्स को बिल्कुल सीरियसली मत लो. ये सीरियस लेने वाली चीज है ही नहीं. नहीं, ये बहुत वैलिड पॉइंट है एंड आई कंप्लीटली एग्री कि एक लाइन होनी चाहिए आपकी प्रोफेशनल एंड पॉलिटिकल की उससे, आपकी पर्सनल लाइफ से, क्योंकि अगर वो लाइन ब्लरी होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी उस पे. एंड नाउ आई वुड लाइक टू कम अपॉन कि क्या कहते हैं, some very serious people जिनको in not just these reasons, political reasons, due to many reasons, लोगों के साथ बुलिंग बहुत ज्यादा होती है एंड उससे लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है. सो मच सो कि लोग गेट इनटू क्लिनिकल डिप्रेशन एंड गेट इनटू सुसाइडल हो जाते हैं लोग. People get suicidal because of these things. How do you think, it's a two-part question, how do you think one should cope with it? How do you think we as a society can prevent it? यार, सबसे पहली चीज तो हाउ कैन अ पर्सन कोप विद इट इज के यू शुड टॉक टू द पीपल जो तुम्हें लगता है कैन अंडरस्टैंड यू. यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स, यू कैन टॉक टू योर सीनियर्स, यू कैन टॉक टू योर टीचर्स. किसी से भी बात करो जिसके साथ तुम कंफर्टेबल हो. द कंफर्ट, अगर तुम्हें कंफर्ट अपने डॉग के साथ मिल रहा है, जस्ट टेक हिम इनटू योर रूम, उसको साथ बिठाओ एंड जस्ट लेट इट आउट. अंदर रखोगे ना, इट इज गोइंग टू हार्म यू. दैट्स ऑल. एंड इस चीज को अगर एज अ सोसाइटी, एज पीपल, हम लोग किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? एक साइबर बुलिंग जो चीज है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करके. थिंग इज कि अगर साइबर बुलिंग इज बेसिकली अ क्रिमिनल ऑफेंस, यू कैन लॉन्च एन एफआईआर ऑन इट. But very few people are willing to do that. And that is the reason, because of that, these online trolls, these people who are very comfortable behind their screens, not hiding their faces, they can do whatever they want because they know कि सामने वाला एक्शन लेगा ही नहीं. एक दो दिन के लिए इंस्टाग्राम बंद कर देगा, या फिर what is he going to lose? सामने वाला, even if that person commits a suicide, he is not going to lose anything. So एक जो हम लोगों को ये वी शुड स्टॉप नॉर्मलाइजिंग दीज थिंग्स कि तुम किसी को पब्लिकली कॉल आउट कर रहे हो इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पे, या फॉर सेक ऑफ जोक्स अगर तुम किसी को बुली कर रहे हो, किसी के ओपिनियंस के लिए तुम उनको कॉल आउट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो. वी शुड स्टॉप नॉर्मलाइजिंग दीज थिंग्स. एंड जो साइबर क्राइम वगैरह की जो चीजें हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट. खासकर की जो जनरेशन है जो हमसे छोटी है, 14-15 ईयर ओल्ड गाइज, कूल बनने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे. और रिसीविंग एंड पे भी ज्यादातर वही बच्चे होते हैं एंड दे डू नॉट नो कि अब क्या करें, किस तरीके से इस चीज को फेस करें. सो दे शुड नो दैट इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड इफ यू वांट टू, यू कैन टेक एन एक्शन. एंड टेकिंग एन एक्शन इज अ वेरी नेसेसरी स्टेप. Basically, you need courage. Exactly.
करेज की बहुत जरूरत है आपको टू स्पीक आउट कि तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है. एंड बेसिकली दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव ऑफ वी विल लिसन कि वी स्टार्टेड दिस. हमने अपने बायोस में अपने पेज की बायो में लिखा हुआ है वी पुट अ कूमी अकाउंट so that you can text us your problems anonymously, and if you wish, actually basically we are here to listen. This is the reason why we started this initiative, क्योंकि awareness शुरू तभी होगी अगर हम इसको normalize करना शुरू करेंगे. लोग अवेयर तभी होंगे अगर हम लोगों को बोलेंगे कि यू कैन कंफर्टेबली anonymously share whatever you feel like with us. तुम basically not everybody can afford therapy sessions, not everybody can afford to go to a Exactly. psychiatrist. And the very first reason is as kids हमारे लिए वो I think to some extent सही भी नहीं है to go up to a therapist. And वो क्योंकि right now we are in a learning phase, and in our learning phase we need to know how to face problems. We need to face problems, and उन problems को face करते हुए हेल्प लेना गलत नहीं है, बट उन प्रॉब्लम्स को एक तरीके से इरेडिकेट ही कर देना, उन प्रॉब्लम्स को टू पुश देम ऑन समवन एल्स और समथिंग एल्स, वो गलत है. सो दैट इज व्हाई आई थिंक कि लिसनिंग हेल्प्स अ लॉट. And venting out your feelings, what you feel inside, putting that out really helps and really makes a difference. तो इसी वजह से I would like to talk to you about, I personally have had this conversation with my parents. I have had this conversation with my parents about when I was feeling very low. एक पॉइंट ऑफ टाइम था इन माय लाइफ इन 2019 जब मेरे आसपास एवरीथिंग वाज फॉलिंग अपार्ट, मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो रहा था. एंड आई डिड टेल माय पेरेंट्स कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्टेड है. आई एम वेरी सैड फॉर अ लॉट ऑफ टाइम. आई एम सैड ऑल द टाइम, एंड आई काइंड ऑफ माइट बी डिप्रेस्ड. And everybody's parents takes it differently. How do you think one should approach it to tell their parents, and how, if you as an adult have talked to your parents about it, and what was your experience of it? Basically, the way of approaching your parents depends from parent to parent how they're going to perceive it, and a child knows that better than anyone else. Okay. Now, I was the type of person who used to keep things to himself. I was not the type of person who would go to someone and talk it out. My best friend was my dog, my pet dog, and whenever I used to feel bad or feel low, we used to hang out in my room and I used to talk to him, and you know, and I used to get a sense of comfort that he is listening to me. I'm venting out, something is going out. I tried to talk to my parents a few times. One time, I remember I I just called them. I said I want to talk to about something. They said, "Kya hua?" I said, okay, I know that something is wrong in my head. I'm not feeling well. I'm not able to concentrate on the things which I used to love, because there was a time I used to love debates. I used to love doing MUNs, and मेरे life में 1-1.5 साल ऐसा था जब I did zero MUNs, zero debates. I stopped going out. I did, I completely ruined myself, to be very practical about it. So I talked to them, and their reaction was what I would expect from a normal Indian household. के जिम जाओ and रात को जल्दी सो, फोन कम चलाओ, these kind of things. And I basically do not blame them. I do not blame them at all, because this is a kind of reaction you would get from any family. So I explained them that this is not something जो मुझे बाहर से affect हो रहा है. This is something which is affecting me from inside. There is some chemical imbalance inside my head which needs a doctor, which needs a professional. It is not something जो मैं किताबें देख के या फिर लोहा उठा के ठीक कर सकता हूँ. This is not something like that. 1 साल तक आपको बाहर का external force तंग नहीं कर सकता. So they understood. They took me to a psychiatrist. We talked to a psychiatrist. We got to some conclusions. That's that. So अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी है, even if you feel के they are not going to understand, try it. Maybe they will. The worst thing which can happen is they will not understand. That's the worst case scenario. But कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज चले तो जाएगी ना कि our son or our daughter is going through something. And mind it, every parent wants कि उनका बच्चा खुश रहे, वो किसी प्रॉब्लम से ना गुजरे. So on their level they are going to help you go through that.
एंड इफ यू फील कि तुम्हें इस टॉपिक के बारे में उनसे ज्यादा पता है, एक्सप्लेन इट टू देम. विदाउट एक्सप्लेनिंग चुप रहने से कुछ नहीं होगा. दे डू नॉट हैव द एबिलिटी ऑफ टेलीपैथी. यू आर नॉट अ टेलीपैथी एक्सपर्ट के तुम अपने दिमाग में रूम में बैठ के सोचते रहोगे उनको पता चल जाएगा. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. तुम्हें उनके पास जाना है, उनको बिठाना है. ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू देम. If they understand, they take you to a professional, well and good. If they do not, try to make them understand. And the pages like yours, and there are a lot of other pages which are doing the good work of empowering people by listening to them, because I feel कि किसी को सुनना सबसे बड़ी चीज है जो तुम किसी के लिए कर सकते हो. Sometimes all we need is someone to listen. Sometimes we just need a friend. And people are usually more comfortable opening up to an anonymous who don't want to someone they know, because आसपास में करोगे तो तुम्हें जज होने का डर रहता है. इफ यू आर कन्फेसिंग टू समवन यू डोंट इवन नो हु, मतलब तुम्हें पता भी पे कौन बैठा हुआ है, एंड anonymously अगर तुम कर रहे हो तो के he cannot use that. He cannot judge you on that because he does not even know you. Exactly. Yeah, that is why we started this initiative. So let's come back to some of the advice we needed from you. That is key. How was it handling a mental health page on Instagram? What was your experience of it, and some things that we should look out for? एक आई थिंक मेरे लिए, मैंने काफी टाइम तक बीच में मेरा ऑफ रहा था इंस्टाग्राम पे ये पेज, बिकॉज ऑफ माय पर्सनल सम रीजंस. एंड बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट तो हमें पढ़ाई वगैरह का अलग स्ट्रेस रहता है एंड ऑल दैट. तो वन थिंग व्हिच आई वांट यू to do, which I couldn't do personally, was stay consistent. Consistency is the key. And एक चीज मैंने realize की है कि if you are opening up a mental health page, you have to be there at all times. What I felt was that if I was planning to shut down that page because I felt that I'm not able to devote a lot of time for that. And if there is someone who is texting me at 4 p.m. in the afternoon, and I'm not there behind the screen going to help him, something wrong can happen, and that's a guilt with which I have to live my entire life. I do not want that. So you have to stay consistent. You have to be there for everyone. You have to be there every time, because किसी को भी किसी भी टाइम हेल्प चाहिए हो सकती है. एंड इफ यू आर नॉट देयर एट द टाइम ऑफ नीड, तो फिर तो भाई तुम्हारे पेज का जो मोटिव है वो पॉइंटलेस हो जाएगा. यू आर देयर टू लिसन, एंड इफ यू आर नॉट देयर विद समवन, तो फिर तो वो चीज मतलब एकदम पॉइंटलेस हो जाएगी. एंड सेकंड थिंग के एंगेज करना, लोगों के साथ एंगेज करना, गिव देम द एडवाइस दे वांट. एंड ऑब्वियसली वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, एंड हम लोग ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि वी कैन हियर समवन आउट. एंड advice तुम्हें जो देनी है, you should be very careful with your advice, because sometimes the things can backfire. So one thing which a page should always promote is seeking a professional help. And if you are having a mental health organization, so the primary aim should be to be a listener, and then secondary aim should be to help them go through that and suggest them to go to a professional help center like a psychiatrist or a psychologist. Thank you. These are very helpful tips, and some of them we do try to implement. We are trying to be consistent with what we do, but of course, as you said, that there is a lot of pressure on us students, as we are all science students. Exactly. You were a science student. I'm a science student. My partner Vihan, he is also opting science in class 11th. So we are all busy, but still we try, because this was an initiative we really wanted to take, because there were times where I didn't have anybody to talk to, and it took me a lot of courage to go up to my parents to talk to them about it. So I believe that opening a mental health page where somebody could talk to us, a safe space, basically a comfortable place where somebody could talk to you. I believed if we were the ones who could start that, and we could help, we could even help out 2 or 3 people who who were comfortable talking to us, and we helped them take the step. It would be really great if we could help them take the step. So that is why we opened this. And one last thing I would like to ask you, how do you think that schools and colleges can contribute to spreading awareness about mental health?
Well, to be very frank, the only thing the schools and colleges nowadays, which their contribution is worsening the mental health of a student. You are, I'm just being honest, man. That's the feeling of almost every student, which they feel. There is no anti-bullying environment. The teachers are harassing students, and there are no actions are taken. And an environment of fear is being created in the schools and colleges. There are no classes for mental health. You are not teaching students about. You are teaching them perpendicular. You are teaching them the Pythagoras theorem, which is not going to help them in their future. But one thing which is definitely going to save a life, that is the mental health. You are teaching them nothing about it. So basically, we need a renewal of the curriculum, and definitely what we need is creating an awareness in the schools and colleges as well, in all the educational institutes. And also we need all these, the teachers and these mentors, in लोगों को पता होना चाहिए how to approach the students, because sometimes, we as students, we have gone through that phase that teachers sometimes make personal comments on students, and not every student is strong enough to take those comments. Sometimes it affects them bad, and घर जाके कोई बंदा कितना रोता है उस चीज पे, क्या सोचता है उस बारे में, we do not know. We don't. So, there should be a strict action taken against such teachers and such mentors. And one thing which, both you and me agree on is कि कहीं ना कहीं इसमें ये चीजें सिखाना शुरू कर देनी चाहिए. We should let them understand that, one thing a senior of mine once told me, that always accept your vulnerabilities. Like, if you know कि मैं इस चीज से तंग होता हूँ, तो accept it, don't run from it, accept it, and then go seek help for it. अपने आप में अगर तुम भागते रहोगे, तो it is going to keep running after you, and if you keep running, there will be a point of time when you will trip and it will fall all over you, and you are going to feel trapped. So do not run from it. If there is a issue going on, seek help from it, accept it, and seek help. For schools or colleges, like I said, the curriculum and the environment should be changed. A student friendly environment should be adopted for sure, because the environment right now, that is not student friendly at all. I know I might get criticized for it, but the environments in the schools and colleges are not student friendly at all. मतलब, you are expecting a child to come 6 days at a school, and you give him one holiday, and और उस एक छुट्टी में भी you are expecting him to do 50 sheets of maths and 40 sheets of science, and पता नहीं और कौन-कौन सी dates करनी है. You're not giving the child the time to discover himself. If you're not giving someone a time to discover himself, how on earth is he going to know what his abilities are, and how is he going to face life? उसका आधे से ज्यादा टाइम तो तुम्हारे फालतू पेजेस को गिनने में और लिखने में निकल जाएगा. Exactly. So, we should just revamp this curriculum and make teachers and all that, because teachers भी तो वही पिछली generation के ही है. So obviously, educate them and make sure that they are capable enough to educate us regarding these issues. So basically, we need to make schools and teachers aware of mental health before they can help spreading the awareness. Exactly. उनको पहले अवेयर करना हमारे को बहुत जरूरी, एंड दिस इज काइंड ऑफ द बेस्ट पॉइंट जो हमने इस पॉडकास्ट से निकाला है, क्योंकि schools and colleges are basically, I believe, as a student spends 80% of his time related to or with activities, doing activities related to their schools and colleges. So if most of their time is there, the school and colleges can have a really large impact on how a person's mental health is. And if the school and colleges are aware of how serious this issue is and how seriously we need to address mental health, they can help with the mental health situation among teenagers a lot. I believe a lot they can help. So I guess that's it. Any final closing remarks you would like to give? Farha, I just want to thank you for taking up this initiative of, just listening up to people. I feel really privileged that you have called upon me and you have asked me to express my opinions. I really want to thank you for that. And I just want to say you are doing an excellent job. And I wouldn't say consistent, but I really wish you keep up the good work. And you deserve all the credit, man. You're just doing an excellent job.
एंड जो तुम्हारा एम है, जो तुम्हारा मोटिव है, आई रियली विश यू सक्सेस. आई विश कि जो तुम्हारा एम है कि you know you spread the awareness about health, वो पूरी हो. And to all the people who are listening to this, man, please take your mental health seriously. It is not a joke. It is something far more serious than what I expect a physical injury to be, because physical injury को तुम बाहर से कुछ करवा के, पट्टी वगैरह करवा के ठीक करोगे, पर अगर अंदर की लड़ाई है ना, उसको तुम ऐसे ठीक नहीं कर सकते. You need help for that. Accept it and go seek out the help you need. Thank you so much. Thank you so much, Hriday, for being with us, and thank you so much for the very kind remarks. We will try our best. We will try our best that we stay consistent and we make something good out of this initiative. So, thank you everybody for tuning into the We Will Listen podcast. We will see you guys in the next one.